So I have simplified the concept of bubble diagram furthermore. इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर से हम इंडिकेट कर रहे थे, दिस वाज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. So this is our OC. What is this? OC, organizational chart. Got the point? So in this itself, we have done the bubble. This organizational chart gives you the hierarchy in the company. Like head architect is the one who is leading the whole company, in which construction manager is reporting to head architect, and these people are reporting to construction manager, and these two people are coming together to report to the senior project manager. Likewise, these three are connected with senior architect. Again, these three connected with senior architect too. Likewise, this is also connected with head engineer. So this particular way of working is called organizational chart. Every company may have a different way of working. So this chart may vary. Somewhere maybe you don't have such a huge or three level chain. There could be just one level or two level chain. There could be three, four, five departments. So these actually serve as the departments because these senior people are responsible to report about the activity of the company to the head of the company, director of the company. Got the point? So already I have explained in another video. Today I'm going to show you the exact bubble diagram, the most solved and simplified bubble diagram. इसमें मैंने क्या किया कि ये देखिए हेड आर्किटेक्ट, उसके अंडर में आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जिसका आपस में जो adjacency है वो प्राइमरी है. दिस इज द प्राइमरी adjacency. We have taken two considerations in the legend: immediate or primary adjacency and shared spaces. When two bubbles are overlapping each other, it means it's shared space. Shared space means in one room two or more people are going to share the that particular space of the room. That's the meaning. To make it simple, I have just kept two legends because when you do bubble diagram, the most important thing to consider here is to have the adjacency understanding. Again, these adjacency, sometimes some people do primary, secondary, and then no adjacency. So level of adjacency, you can decide to do the detailed bubble diagram. But if you're having more legends options, then you have more confusion over here. So make it real stuff, the real actual bubble diagram. The first and foremost thing, we just consider the adjacency, that to the primary ones. So I have just considered the primary ones and the shared space. You can see these two are the shared. Shared means this project manager and the intern are going to come together in one particular room. Here also draftsman and the intern are sharing one particular room. Likewise, you can see here and here also. But these individual bubbles show what? That these people are holding their own private space, particularly enclosed, and they are into open. There could be 5, 6 draftsmen with 2, 3, 4, 5 interns, but they are going to be grouped together in a particular room. So the privacy level here is higher, and here it is very, very low. Now, for the ease of working and reporting, I have divided the whole legend of the architecture office in two simple steps. Step number one is to understand the OC, organizational chart. The same organizational chart have been reflected here, which is encircled, because these are the people, those who are holding the position in the company. So based on organizational chart, based on their hierarchy level and who reports to whom, we give the importance in terms of giving them higher amount of space, number of furniture, the decor, the look, and everything will be higher in higher position. It will be lower in lower position.
the size of the furniture and everything, is going to be higher in the higher positions. So you can see head architect, the same thing I'm following here. So the thing which you see here, these adjacency symbols are also shown here. So looking at this, and this is almost same thing, but we need OC to draw this. So under head architect, you have construction manager, who is going to connect to these people, and these people are going to connect further to these people. So this is how we organize this space. The moment you know that this is how the space is organized, then while developing your block diagram or furniture layout, you keep the track of this is going to be a data. This is going to be currency for your space planning. If we spend a lot of time into it, it means that the planning is very strong. You have planned the whole thing, not out of blue. It shows that you have taken the complete consideration that how the ease of working will be and what is the reporting pattern. So these are the positions, and these people are going to occupy the space, net assigned square footage area. But when it comes to these supporting areas like waiting area, reception, meeting, brainstorming, conference, pantry, and all, and sample area, these are even cafeteria, these are what? These are supporting areas. So clubbing them together in this particular wheel, this space, is very difficult. Why so? Because it becomes very the neatness and the clarity is lost. Because of that, I have separated them like this, because these are only supporting areas for the office. These spaces are almost everywhere in almost all types of offices. And these are specifically based on what kind of office it is. If it is banks, obviously these are the positions. If it is architecture office, these are the positions. If it is say advertising office, so these are the positions. But these spaces will be common to all these which I have mentioned. So how do we look at it? Just look at it. So what I did after making the adjacency of these people, those who are holding positions in the company, I have encircled this. After this circle is further getting connected to cafeteria, means this cafeteria is going to be used by all of them or most of them. So cafeteria is not essentially going to be near to project manager or senior engineer or junior engineer. It should be connected to all, means cafeteria can be kept anywhere because it is going to cater to all the positions, all the people holding the space. Likewise, we have sample area. So it's not that sample area can't be accessed or should not be accessed by the head engineer or maybe senior architect or junior architect or draftsman. So it shows that sample area, since this particular whole space is indicated by one circle, means this circle is saying the sample room will be accessed by all. Again, putting sample area in any location will do. There's no problem. But if you say, sir, because mostly draftsmen and then the junior architects and engineers are going to access the sample area, if you have that kind of planning, if you feel and if you know by inquiring and interviewing your potential client, or maybe you have knowledge that sample room is not accessed by all, only the lower position, then the whole scenario will change. I'll have to put the sample area, I'll have to move this here. After moving it here, then you'll have to connect with the spaces or the positions, those who are going to access this sample area. But in my consideration, same sample area is going to be accessed by all. दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट हियर. सो आप पे डिपेंड करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज या सर्वे पे इंटरव्यू के बाद, क्योंकि जब भी आप स्पेस प्लानिंग कर रहे हो तो जो इसके एंड यूजर है उसको आपको इंटरव्यू करना है, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना है, समझना है, उसके बाद ही हम डिसाइड करें. जैसे सैंपल एरिया कुछ कहेंगे नहीं, ये तो लोअर पोजीशंस को ही
सूट करता है उनके पास हो। दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है कि नहीं, सैंपल रूम तो कोई भी एक्सेस कर सकता है और करना भी चाहिए। सो उस केस में हमने क्या करा कि एक पूरा सर्कल बनाया, मीन्स सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं सैंपल एरिया को। ये एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है मेल फीमेल टॉयलेट्स, in which obviously irrespective of what position you hold everyone has to use this. So ये सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं इस वॉशरूम का। ठीक है, तो इसको हमने अगर ऐसे कर दिया तो देखिए नीटनेस बढ़ गई। इसमें हम कैसे कनेक्ट करते सभी को सभी से? सो हमने क्या करा, एनसर्कल किया कि हाँ ये सभी लोग इसको एक्सेस करेंगे। जब सभी लोग एक्सेस करेंगे, आप इसमें से ये बताएं कि कैफेटेरिया, सैंपल एरिया एंड ये वॉशरूम, इनमें किसकी लोकेशन इन तीनों में से ऐसे होना चाहिए कि सभी लोगों को एक्सेस करना आसान हो? ये टॉयलेट। यस, ऑब्वियसली। अब क्वेश्चन ये भी आता है, सिंस दिस इज बीइंग अ प्लेस वेयर hell lot of care and maintenance is required. So positioning somewhere in the center would really be a good choice or decision, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड तो मांग रहा है ना, सभी को एक्सेस करना। सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सेसिबिलिटी किसकी है इन तीनों में से? सभी के लिए, क्योंकि सभी के लिए हमने दिखाया यहाँ पे, तो वो वॉशरूम है, तो सेंट्रल पोजीशन इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन अगेन जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के चलते हैं, बिकॉज द स्मेल एंड एवरीथिंग। हमें यहाँ नहीं देना है, इवन एग्जॉस्ट भी चाहिए होता है इसको। इस एरिया को ड्राई होना भी रिक्वायर्ड होता है। तो सपोज साउदर्न एरिया में दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बेटर है। तो इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी की कॉन्सेप्ट भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे कंसिडरेशंस के बाद हम डिसाइड करते हैं। तो ये सेंट्रल लोकेशंस पे नहीं जा सकता, ये कॉर्नर पे ही हो सकता है। हालांकि एडजेसेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेंट्रली होना चाहिए था। गेटिंग अ पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू दिस कॉन्फ्रेंस रूम। नाउ कॉन्फ्रेंस रूम इज अ सपोर्टिंग एरिया, दैट्स नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। OC is strictly human occupied spaces, and this is free space. You are not going to hold this space for the whole day. It's just that you are coming to this space once it is required. सो कॉन्फ्रेंस रूम सभी के एक्सेस के लिए है, सभी के लिए हो सकता है। कॉन्फ्रेंस रूम में ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर के सीनियर लोग हैं सिर्फ इनके कॉन्फ्रेंस हो। कभी ये भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट के लोगों का कॉन्फ्रेंस हो। कभी ये हो सकता है कि दो क्रॉस डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो। बिकॉज बिकॉज कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्फ्रेंसिंग या कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, सो the concerned people has to come. This is not the place where all time people are occupying this space. ये फ्री स्पेस है। ये जितनी भी स्पेसेस अभी तक देखे ना आपने ऊपर में, सारे के सारे फ्री स्पेसेस है। मीन्स ये फुल डे ऑक्युपाइड नहीं रहने वाले हैं। सो कॉन्फ्रेंस रूम प्रोबेबिलिटी क्या है कि सभी लोग यूज कर सकते हैं। सो इसको भी हमने इससे बाहर रखा। अब हम देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एरिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स कोई आइडिया को डिस्कस करना है, या ये ओपन प्लेटफॉर्म की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह माना जाता है जहां पे anybody can walk in and discuss and decide. And because at times what happens is that despite being the most intelligent people who are attending the meeting or the conference, at times what happens is that जो बहुत छोटे पोजीशन का है उस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, कुछ आइडिया दे सकता है। सो इट्स अ न्यू वे ऑफ हैविंग दी दिस काइंड ऑफ स्पेस इन दी मॉडर्न ऑफिस। पहले ऐसा होता नहीं था। सो बीइंग अ क्रिएटिव फील्ड यहाँ पे तो खास करके रिक्वायर्ड है। सो दिस अगेन सभी के लिए, सभी से ये कनेक्टेड है, कोई भी आ सकता है। सो इस कंप्लीट स्पेस का एडजेसेंसी इन सब जगहों से है। मीटिंग रूम का भी वैसे ही है, पेंट्री का भी वैसे ही है, सभी को सर्व करना है, इसलिए ये बाहर है। अब ये वेटिंग एरिया एंड ये है हमारा रिसेप्शन। इस रिसेप्शन को हमने इन दोनों को ओवरलैप किया है। क्यों किया है? क्योंकि बोथ द एरियाज आर शेयरिंग अ कॉमन स्पेस और द रूम और एनक्लोज स्पेस। कोई भी एनक्लोज स्पेस को दो एरिया अगर यूज करता है, शेयर करता है, तो उसमें हम लोग बबल को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया है लेजेंड के अंदर में।
अब ये रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया कहाँ पे होगा? एंट्री के पास। तो मोस्टली ये जो सपोर्ट एरियाज होते हैं, मोस्टली देखो कितना आसान हो जाता है डिजाइन करना ऑफिस। मोस्टली जो एरियाज ये जो देख रहे हैं सपोर्ट एरियाज, ये एंट्रेंस के आसपास होते हैं और ये अंदर की तरफ होते हैं बेस्ड ऑन हु रिपोर्ट्स टू होम। ईज ऑफ वर्किंग देखते हैं यहाँ पे हम, और रिपोर्टिंग पैटर्न को भी देखते हैं। ये मस्ट है देखना। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी स्पेस प्लानिंग कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। लोग क्या करते हैं कि ये जो स्पेसेस देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो हमने इतने सारे बबल्स बनाए, पूरा का पूरा हमने इसको एक लॉजिक रीजनिंग और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनको कनेक्ट किया हुआ है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के थ्रू, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो ये जो सारी चीजें हम लोग करके ये दिखाना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये इनिशियल हमारा प्लानिंग है। और ये इनिशियल प्लानिंग है, लेकिन बहुत स्ट्रांग प्लानिंग यहाँ रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पे हमने प्लान नहीं किया तो इसको हम बबल को, अब बबल को हम ना एक स्पेस में ले जा करके बबल बनाएंगे, फिर ब्लॉक करेंगे एंड देन फर्नीचर लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है हेड इंजीनियर, और इससे स्ट्रॉन्ग एडजेसेंसी रिक्वायर्ड है। जब हमें पता चल गया कि इन सभी को इससे स्ट्रॉन्ग एडजेसेंसी रिक्वायर्ड है और इसकी इससे एडजेसेंसी रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली अगर हम कोई स्पेस क्रिएट करेंगे, अगर हमने हेड आर्किटेक्ट को वहां रखा है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर कहीं ना कहीं उसके बिल्कुल पास होगा और ये लोग भी इसके पास होंगे। ये हमें एडजेसेंसी इन स्पेसेस की मिल गई। ये हमें कंसीडर करना ही होगा कि ये हेड आर्किटेक्ट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, एंड दीज आर दीज पीपल। हम इनको दूसरे एरिया में नहीं रख सकते क्योंकि ईज ऑफ वर्किंग इज रिक्वायर्ड एंड द रिपोर्टिंग पैटर्न इज एज सच दैट यू विल हैव टू हैव देम इन वन प्लेस। सो ये हमें क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है वाइल मेकिंग दी ब्लॉकिंग और दी फर्नीचर लेआउट। पहले हम ब्लॉकिंग करते हैं, उसके बाद फर्नीचर लेआउट करते हैं। देखिए स्पेस को हम प्लान कर रहे हैं, स्पेस के अंदर जो हम फर्नीचर लगाते हैं दैट्स इजियर। कोई भी कर सकता है कि केबिन में कौन कौन से फर्नीचर होते हैं, बेडरूम में कौन से होते हैं, लिविंग रूम में कौन से होते हैं, फर्नीचर किस स्पेस में कैसा होता है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डू। बट planning is such a thing that till the time you don't use your brain, you don't organize the space like this, then you will fail in obtaining the high performance office space where ease of working is very very important thing. Reporting pattern is very very important thing. So इसमें देख सकते हैं बेसिकली हमने दो सेक्शन में बांट दिया बबल को। आपको इस तरह का पैटर्न इंटरनेट पे या कहीं सोर्सेस से नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इज व्हाट इज डन हियर। कि ओसी को हमने यहाँ फॉलो किया, पोजीशंस को हमने, जितने भी लोग होल्ड करते हैं पोजीशन को हमने यहाँ रखा, सपोर्टिंग स्पेसेस को हमने बाहर रख करके इनके जो एडजेसेंसीज हैं हमने इन इन सभी के लिए दिखा दिया कि ये जितने भी स्पेसेस दिख रहे हैं इन सभी के लिए। दो स्पेस थोड़ा सा अलग है। देख सकते हैं कि कैफेटेरिया जो है किससे लिंक्ड है? इन पोजीशन होल्डर्स से। लेकिन ये लिंक्ड वेटिंग एरिया से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेटिंग एरिया में आने वाले लोगों के लिए कैफेटेरिया नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल लोगों के लिए। ये वॉशरूम जो दोनों देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? इन लोगों के लिए। इसीलिए ये फर्दर वेटिंग एरिया या रिसेप्शन एरिया से कनेक्टेड नहीं है। वेटिंग और रिसेप्शन एरिया का अपना अलग से वॉशरूम है जो कि फर्दर ये पोजीशन होल्डर्स शेयर नहीं कर रहे हैं इस स्पेस को, इस वॉशरूम को। इसलिए ये हैंगिंग अलोन दिख रहा है ये दोनों, ये तीनों, इवन ये भी। सैंपल एरिया वेटिंग और रिसेप्शन से कोई लिंक रिक्वायर्ड ही नहीं है, नीड ही नहीं है। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम का दोनों से लिंक क्यों है या पेंट्री से लिंक क्यों है? क्योंकि सर्विंग यहाँ भी रिक्वायर्ड है। मीटिंग रूम में हम बाहर के विजिटर्स को ले जाते हैं, इंटरनल लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, इसलिए वेटिंग और रिसेप्शन एरिया से कनेक्टेड है ये। कॉन्फ्रेंस में भी कई बार हम अपने गेस्ट को या यूं कहें कि क्लाइंट को लेकर जाते हैं टू डिस्कवर डिमोन्स्ट्रेट समथिंग, डिमोन्स्ट्रेट अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ से कौन आ रहा है? यहाँ से इंटरनल स्टाफ्स और यहाँ से आउटसाइडर। इसीलिए देख रहे हैं ये कनेक्टेड है दोनों साइड से। सो ये सबसे सिंपल तरीका है करने का। बहुत कम क्राइटेरिया हमने लिया है
लेजेंड में जैसे इमीडिएट एजेंसी एंड शेयर्ड स्पेस, और ईज ऑफ वर्किंग रिपोर्टिंग जो कि इसमें दिखता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में, उसको हमने ध्यान में रखते हुए ये बबल डायग्राम बनाया है। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इतने सारे एडजेसेंस जो लेजेंड है, ये कीज हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझा दूं मैं कि सेकेंडरी एडजेसेंसी, देन नो एडजेसेंसी, एकॉस्टिकल, acoustical, this is not, this is acoustical privacy, visual privacy, clear view, etc., etc., these things are secondary in nature. When we are doing bubble, the first and foremost thing is required the adjacency, that to primary one. If we don't consider secondary, tertiary, and things like that, so that is not going to affect you much. But if you're not considering the primary adjacency, so you will be lost in planning your space. More the bubbles means more this number of spaces you have. It becomes very, very, difficult to organize this space. If you have two, three spaces, so obviously there's no need of bubble. If you have 15, 20, 25, 30 spaces, maybe in 100 or 100, so obviously you need such a tool to solve the mystery or the problem of space laying, space planning. So hope you have understood. Any question if you have, you can ask that why I did this way. I hope by encircling this and connecting this or the whole space occupier with these supporting areas makes sense. Does it make sense to you? या हम अगर इसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर करके दिखाएं, अंदर से सर्कल को हटा दें, ये ज्यादा स्मार्ट चॉइस है, ऐसे करके या डायरेक्ट कनेक्ट करके? बताएं आप। लाइक इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, फर्दर मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर इधर इधर में कनेक्ट कर दिया। सो टू मेनी लाइंस मेक्स इट अ बिट इलेजिबल, लेजिबिलिटी इसकी क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो अगर कोई इंफॉर्मेशन है या कोडेड इंफॉर्मेशन है, इसमें टू मच इंफॉर्मेशन इज नो इंफॉर्मेशन, confusing information is no information. That's why one should have simplified version of bubble diagram like this for any kind of space. Even if you have some other idea to solve it further, you can apply your sense and sensibility to organize your space in whatever manner you think. But the most important thing you'll have to keep in mind the primary adjacency or the immediate adjacency. You can't avoid it. And if you do so, let me tell you, you'll be the best space planner. So being designer doesn't mean just the designing. What you have done, a detailing, a lot of detailing you have done. Now you understand the detailing part. The whole shop drawing and everything, that is good thing to do. That is micro planning, micro detailing. But this is a macro thing, macro planning, and this too is so important that if you are getting huge space, you'll be totally lost. And if you don't know space planning as well as the detailing, it means you are not a designer. You are just a decorator. You are nowhere, whether you have done course for 1 year, 2 years, 3 years. Hope you have understood. Thank you very much for watching this video.